Magnetic, due to this electromagnetic field, you are listening me, you are viewing me, and you are at home, you are understanding the things. Right? So this electromagnetic field is very important subject, and it is related with scalar and vectors. And in scalar and vectors, last time we have seen the vector quantity may be expressed from one point to other point, right? So whatever we have seen last time, the vector calculation I think it is visible to you. Let me see whether you are seeing it or not. Certainly, clarity is somewhat less, but we cannot do anything. But it is visible, right? So no problem. I think it is visible to you. And as we will go ahead now. As we have seen the vector calculation last time, we have seen if we are having a point A, say located at say -4, say we are taking for clarity, say we are taking 4, 3, 6, 1.436, and another point which is say point B located at say 8, 10, 14. This is the second point. First point is 436. 436 means it is the x coordinate, it is the y coordinate, and it is the z coordinate of point A. Similarly, these are the x coordinate, y coordinate, and z coordinate of point D. X coordinate, y coordinate, z coordinate of point A. X coordinate, y coordinate, z coordinate of point B. If 2 points are given to us, we can calculate a vector originated from A and directed towards B. This vector originated from A and directed towards B. This is known as a vector R A B. Vector pointed from A towards B in this direction. This vector can be calculated. How? By taking the coordinates. This vector will be equal to x b minus x coordinate of point A multiplied by
a unit vector in the x direction plus yb minus ya into a unit vector in the y direction and plus zb minus za multiplied by a unit vector in the z direction. So, for calculating the vector, the basic tool and very important clear tool is we have to first draw a line from the starting point to the vector where it is to be pointed, which is our point of interest. And this vector, for calculating this vector, first points are x, y, z coordinates are the coordinates of the pointed vector point, this point. That means, suppose a x component is to be calculated. This x component will be 8 minus 4, that is 4ax. First we have to take the b point coordinate, then we have to take the a point coordinate. In this manner, this vector pointed from A to B will be xb, this coordinate, which is b coordinate of x coordinate of point B, which is 8 minus, we will take this x coordinate of point A multiplied by a unit vector in the x direction, 8 minus 4ax. Then similarly we'll have this one y coordinate 10 minus 3, this will be 10 minus 3 ay. Ay is the unit vector in the y direction. Similarly, the third vector will be the z coordinate of B, that is 14 minus z coordinate of point A into AZ. Again, I think everything is up to the mark. Just I am seeing the chat box. Okay, Anurag has given the answer. Anurag, thank you very much. No problem. But still, we are waiting for the offline students. They are taking lunch. That's why we'll finish one problem. Then next problem we'll take with the outline. Then I don't want to waste your time because you are watching from home. And one more thing I want to tell you is you can watch this in your TV also. अगर मान लो जियो फाइबर है आपके पास तो आप टीवी में भी इसको देख सकते हैं. We are in proper connection, and I think in the TV it will be very clear. Okay, we are going ahead. तो ये वेक्टर जैसे अनुराग ने बताया कि कैलकुलेशन तो हो गया अनुराग का, RAB will be, बाकी लोगों का भी हो गया होगा, not may not be indicated. It will be 4ax plus 7 a1, and this will be plus 14 minus 6 is 8 AZ. So this is a vector from A to B. If we will see the distance between A and B, or we can say separation of A and B. A और B पॉइंट का सेपरेशन क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी. So this distance will be equal to the magnitude of
RAB, and this magnitude will be equal to x component square, y component square, z component square. These are the components 4, 7, and 8. We will write for clarity the full formula as well as we will do the calculation, right? So that everything will be clear. So this magnitude will be for this vector. We can write this magnitude as x component of this vector, that is RAB x component square plus RAB y component square plus RAB z component square. And this will be equal to, and it is very clear, आप लोगों ने कैलकुलेशन कर भी लिया होगा, मैं बार बार क्या वहां पर जाके देख नहीं सकता हूँ, कंप्यूटर इज 2-3 मीटर अवे फ्रॉम मी. So this will be whole square plus 7 square plus 8 square. अब आप लोग इसका कैलकुलेटर में निकाल के बताइए मुझे कितना है, बिकॉज कैलकुलेटर है नहीं, मैं देखता हूँ कैलकुलेटर इसमें, राइट. हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 129 कैलकुलेटर से निकाल लो कितना आ रहा है. ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 129, जैसे आपने लिखा है कुछ वो है ना, कितना आ रहा है भाई. हाँ, अनुराग क्या बताया, 11.35 आ रहा है. चलो ठीक है, वेरी गुड. ये स्क्वायर रूट ऑफ 129 आ गया आपका. इंट्रैक्शन ठीक है, बिल्कुल ये दिख रहा है मुझे, यस. और आ गया 11.35 यूनिट डिस्टेंस. ठीक है, हाँ ठीक है, वो चलेगा अप्रॉक्सीमेटली, तो समझ में नहीं जाने के लिए. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 11.35 यूनिट्स. जैसा भी यूनिट होगा उस हिसाब से, ठीक है. मीटर सेंटीमीटर जो भी फील्ड में हम यूनिट सी लिखते हैं, जैसा कि आपने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है. 35. अच्छा, ये राहुल ने लिखा है भाई 11.357. चलो 357 कर देता हूँ, मैं देखा नहीं इसे, तो चेक इट आल्सो. कैलकुलेटर में चेक करते हैं. ये हो गया भाई डिस्टेंस, है ना. देखते हैं, चेक करते हैं इसको क्या आ रहा है. एक है मेरे पास कुछ कैलकुलेशन का. अभी तक ये ऑफलाइन के स्टूडेंट तो अभी आए नहीं है, तो कुछ लंच में चले गए, तो वी विल चेक इट. देखते हैं इसको. ये आ गया 16 प्लस 11.357. ठीक है, बिल्कुल है ना. ये है कैलकुलेटर में, मेरे पास भी है, मोबाइल से चला रहा हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको, है ना. ठीक है, ये तो डिले है थोड़ा इसमें. ओके, तो यू आर करेक्ट. नाउ वी विल गो अहेड, फिर आगे चलेंगे. अब ये तो हो गया डिस्टेंस और सेपरेशन और मैग्नीट्यूड की बात. अब आगे चलते हैं. ये शायद यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेशन कर दिया है किसी ने. गुड, वेरी गुड. Rohan Verma has calculated unit vector also, and Srijan Dubey has also calculated same. Good. So we are going ahead with the unit vector. The unit vector AAB will be RAB divided by RAB magnitude, which is coming out to be equal to, जैसा कि आपने कैलकुलेशन किया है, बट आई एम राइटिंग इट फुल सो दैट योर नोट्स एंड एवरीथिंग और ऑफलाइन स्टूडेंट्स आल्सो शुड बी क्लियर. वी कैन राइट इट एज 4x plus 7ay plus 8az divided by
the magnitude we are taking 11.357 जैसा आपने किया है, ये कैलकुलेशन बताया था आपने, राइट? So and if we take this, we will get the unit vector. Unit vector क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर है which is having unit magnitude. जैसे ये वेक्टर था ना आर ए बी, अब इसका अगर मान लो यूनिट वेक्टर बताना तो कैसा वेक्टर है ये ऐसा वेक्टर है, ये ऐसा, which is indicated by a b, right, and having magnitude equal to 1. ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो इसके इसलिए कंपोनेंट्स क्या है, पॉइंट्स में आते हैं। कभी भी 1 से अगर ज्यादा आ रहा है यूनिट वेक्टर मतलब गड़बड़ी है अपने कैलकुलेशन में, एंड मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 1, ऐसा आना चाहिए। तो जो भी कंपोनेंट्स आएंगे यूनिट वेक्टर के वो क्या आएंगे, पॉइंट्स में आएंगे, ठीक, जैसा कि आपने कैलकुलेशन किया भी है, राइट? तो मैं वहीं से देख लेता हूँ कैलकुलेशन। यह है 0.352x। Anuj Sharma has joined now. Okay, thank you Anuj for joining us. So just as indicated by you, we will go ahead. 0.352x is coming out to be equal to 0.352x. Then we are having y component as 0.616 ay plus 0.616 ay, and we are having z component as 0.704 plus 0.704 aj. So in this manner you have calculated the unit vector also, and we have completed one problem related with vector calculation, right? So I am not rubbing this problem, but I am giving question number 2 to you, right? We will write here the question number 2, and I think this portion is also visible to you. देखते हैं कहाँ तक आ रहा है आपका। If it is, I think beyond this, I think it is not visible. So we'll write this problem, question number 2 here. यहाँ लिखते हैं question number 2, एक अलग इंक से लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, ये यहाँ, this one I will write here, ये स्पेस देते हैं, this is space for question number 2. ये इसमें I think it is visible to you. और ये क्या कलर का गड़बड़ हो रहा है, मैं व्हाइट से लिखता हूँ, ये स्पेस ले रहे हैं, this space we are taking, and in this space you will write question number 2. ठीक, अब शायद दिख रहा है आपको, क्लियरिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 given 3 points, एक पॉइंट है A which is -2 1 0, B पॉइंट है -3 8, and C पॉइंट है 7 6 -3. These are the 3 points. A है -2 1 0, -2 1 0. If it is not clear, I am speaking. Point B is 5 -3 8. Point C is 7 6 -3. And what you have to calculate is, you have to calculate
पेरीफेरी ऑफ द ट्रायंगल। पेरीफेरी का मतलब पूरे जो ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी कैलकुलेटेड, इसका ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल है हमारा एबीसी, राइट, दिस एबीसी। तो यू हैव टू कैलकुलेट पेरीफेरी ऑफ द फुल ट्रायंगल एबीसी। तो कैसे करना पड़ेगा, आपको पूरे वेक्टर निकालने पड़ेंगे। यू हैव टू कैलकुलेट the first part, you have to calculate RAB, फिर second part you have to calculate RBC, फिर C part RCA। देखिए मैं जो बता रहा हूँ वही कैलकुलेट करिए तब क्या आंसर मैच होगा। अगर मान लो कैलकुलेशन आप गलत करोगे तो मैच नहीं होगा, ठीक है। तो पहले RAB RBC RCA ऐसे कैलकुलेट करिए, और फिर ये ट्रायंगल का जो पेरीफेरी आएगा, दिस perimeter of the triangle will be equal to the all the distances RAB magnitude plus RBC magnitude plus RCA magnitude। ठीक, अब ये सेकंड प्रॉब्लम आप बनाइए अपनी कॉपी में।